प्रमुख स्वामी महाराज मानते थे कि शिक्षण का हृदय वो हृदय का शिक्षण है। मतलब द हार्ट ऑफ एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ हार्ट। ये प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, लेकिन सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, सेवा, ये सभी प्रकार के संस्कार शिक्षण के वक्त विद्यार्थी को बचपन से अगर दिए जाए तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, समाज का एक अच्छा सेवक बनेगा, परिवार का एक अच्छा सभ्य बनेगा। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज का यह विधान बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी है, सालों और सदियों के बाद भी रहेगा, युगों के बाद भी रहेगा कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। उसका एक यज्ञ प्रमुख स्वामी महाराज ने शुरू किया था। प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर बात करते थे कि लक्षण युक्त शिक्षण होगा तो वो शिक्षण हमारा रक्षण करेगा, और बिना लक्षण का शिक्षण हमारा भक्षण करेगा। शिक्षक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को उसके साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें हमारे भव्य सनातन धर्म के सत्शास्त्रों में से, आसपास बनती हुई घटनाओं में से कुछ ऐसी बातें करें, रोज रात को साथ में बैठ के ऐसी बातें करें, ऐसी प्रेरणाएं दे, ऐसी समझदारी उसके जीवन में दृढ़ करवाए कि मेरे जीवन में शिक्षण की तो कीमत है, लेकिन सद्गुण की कीमत ज्यादा है। ये अगर हर विद्यार्थी समझ ले तो समाज और देश, विश्व को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज चिंतित थे। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने सब व्यवस्थाएं भी की। 35 से भी ज्यादा छात्रावास बनाए, स्कूल्स बनाई, कई कॉलेज में उन्होंने डोनेशंस भी दिए, और शिक्षण के साथ संस्कार विद्यार्थी को मिले, इसके लिए वे हमेशा पूर्ण प्रयत्नशील रहे। संतों को इस कार्य में जुड़ा, कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रेरणाएं दी। तो उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयत्न से आज हम देखते हैं कि एक संस्कार युक्त युवान तैयार हुए हैं। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाए तो वहां उनका मुख्य लोगो है कि एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। मतलब आप यहां आए सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आप यहां से जाए सेवा की भावना लेके जाना, सेवा करने के लिए आप समाज में जाते हो। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल से ये बात करते आए हैं
कि संस्कार युक्त शिक्षण होना चाहिए। બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામીજીને આપણે બધા પ્રેમથી બાપા કહીએ, અને કોઈ વિશેષ વાત કરવી એ અયોગ્ય ગણાય બાપા વિશે, કારણ કે એની જે યાત્રા હતી, યાત્રાની અંદર હજારો સંસ્થાઓ, લાખો સંપર્ક અને સમય જોયા વગર બાપાનું જે કાર્ય હતું, અદ્ભુત કાર્ય હતું. આ ભારત દેશમાં નહીં પણ આખી દુનિયાની અંદર બાપા એટલા બધા સ્પર્શી ગયેલા કે આજે એનું પરિણામ આપણે આ ધરતી ઉપર અમદાવાદની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. આમાં આપ બેઠા છો એમાં ઘણા લોકો ખોડલધામનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, અને એને શરૂઆત જ્યારથી કરી છે ત્યારથી બાપા અને બાપ્સના તમામ સંતોના આશીર્વાદ લઈને જ આ શરૂઆત અમે કરી છે. 2012માં બરાબર મને યાદ છે, અમે બધા મિત્રો વિચાર કરતા હતા કે આવડું મોટું કાર્ય આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે ને તો પહેલી શિલા પૂજન તો બાપાના હાથે જ થવી જોઈએ. અને અમે એટલા નસીબદાર હતા કે બાપાએ અમને દાદરમાં સમય આપ્યો, અને બાપા બરાબર મને યાદ છે સવારે 9 વાગે વ્હીલચેર ઉપર હતા છતાં પણ ખૂબ જ લાગણીથી, ભાવથી, પ્રેમથી શિલા પૂજન કરી અને એવા આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમારું મંદિર જે સમય નિર્ધારિત છે એનાથી વહેલું પૂરું થશે. અને આપ મને જણાવતા આનંદ થાય. My journey with Pramukh Swami ji started during my BBA days in BJVM in 1976 to 79, and it was a rare occasion that later on Pramukh Swami ji blessed me by putting his hand on my head, and many told me that you are very lucky that normally Pramukh Swami would bless you, but he has put his hand on you, so you will always progress and you are always be protected. And I can proudly say that those words were true. I can summarize that Pramukh Swamiji was the only signpost of God in the last century to have inspired and built 1,100 temples, and 80 of them in North America and United States and Canada, and 6 of them world class over there, like Akshardham in Ahmedabad and Akshardham in New Delhi. In last 500 years, and please mark my words, last 500 years, there has been no king, no saint, no Raja who has inspired to build 1,100 temples in addition to 100 which were. So please give a big hand to yourself, those who are present here, and your pranam and my pranam to Pramukh Swami Maharaj. I was awarded Teaching Excellence Award for 2015 in Philadelphia, the only one award for South Asia. In 2017, I was elected to be chair of South Asia for
United States Global Accreditation Council called ACBSP, or Accreditation Council for Business Schools and Programs. And in 2022 at Washington, D.C., I was nominated to the Accreditation Governance Board of ACBSP as the only Indian in their history holding two board positions simultaneously. This cannot come without the blessings that I received from Pramukh Swami Maharaj. And I realized there is one common thread between you, all of you, me, and Pramukh Swami Maharaj. And that common thread is the faith. ये केवल 100 वर्ष की महोत्सव की एक महीने के इस आयोजन की ही व्यवस्था नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आगे के 1000 वर्षों का एक महान ग्रंथ इस शताब्दी महोत्सव के माध्यम से BAPS के द्वारा लिखा जा रहा है। कि किसी के जीवन में बदल लाना है तो नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति, उसके जीवन से अवगुणों की मुक्ति पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने अपने जीवन के द्वारा, अपने सानिध्य के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा करोड़ों करोड़ परिवारों को व्यसन मुक्त करके भारत को एक नया संदेश दिया है। आजादी के 75 वर्ष और पूज्य प्रमुख स्वामी जी के 100 वर्ष, मैं जरूर कह सकता हूं कि हम फिर से वसुधैव कुटुंबकम के भारत के विचार को जीवंत करने के लिए, और यह जो महोत्सव है ये एक महान प्रेरणा लेकर के आएगा। The time has now come for us to look at the life of Pramukh Swami Maharaj, who taught us to live together as human beings, to be compassionate to each other, to take care of our children, take care of nature, all living things on this planet. He set out to have temples all over the world to tell people that we have to live in peace. We have to find the path so that good karma will be bestowed on us. We must not harm anybody. We must take care of everybody in our society. That is the message that he gave us. जब तक भारत के हर विद्यालय सरकारी हो बेसरकारी हो, ये अध्यात्म विद्या जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एजुकेशन, सेक्टेरियन नहीं, सांप्रदायिक नहीं, पर यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एजुकेशन जब तक हमारे विद्यालय में स्थान नहीं होता है तब तक शायद आदर्श भारतीय नागरिक को निर्माण करना बहुत कठिन होगा। और जब तक आदर्श भारतीय नागरिक नहीं होंगे तो आप आदर्श भारत नहीं बनेगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से जो शिक्षा अनुष्ठान बने हैं वो इस आदर्श मनुष्य, आदर्श व्यक्ति के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अति अभिनंदनीय है। ये सेवक को प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य लाभ करने का अवसर मिला था। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था कई साल पहले, और हेलीकॉप्टर में ये सेवक प्रमुख स्वामी महाराज के साथ उस गांव को गए। वहाँ पे सब कुछ विनाश हो गया था और वहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से, दिग्दर्शन से गांव को एक नया गांव, एक सुंदर गांव के रूप में प्रतिष्ठा उन्होंने करवाया। तो ये जो काम है ये सब एक दिव्य चेतना से संभव है। अंदर से अगर वो दिव्यता है तो वो बाहर प्रकाश होता ही है। Long ago, several times I visited Sarangpur. At different places I had sought the divine blessings of Param Pujya Swamiji. That was a sweet memory.
and that used to be a great pilgrimage for me whenever I would visit Pujya Swamiji. The person one who is going to realize oneself is the one who is going to understand the society and the one who is going to serve the society. Pujya Swamiji, it is with this vision, established so many institutions. As I know, hundreds, 1,000 plus sannyasis are prepared for the cause. More than 1,200 temples are established across the world. More than 5,000 satsanga centers are established to give the moral education and the pure knowledge. Several times I visited Swami Narayan Akshardham Mandir at Chicago, in Robbinsville, New Jersey. Since its inception, I have been seeing. These mandirs, temples, have been bringing radical changes in the minds of the children and the students. Though our people have been living away from our culture, from our country, still because of these centers, apart from what they are being taught in their respective institutions, are being taught with these value educations and ethical and moralities. If this kind of education can be imparted everywhere, no matter what is the kind of education they are getting through education institutions, with these values, they are going to become quite great. When I came to have darshan of Pujya Swamiji a decade ago, exactly, almost a decade ago, at Sarangpur, during that time, Pujya Swamiji had given me a mala. Even today, it is a great inspiration for me. Still, I have been holding that. Pujya Swami, Pramukh Swami Maharaj was a great, inspiring personality. He was the embodiment of the love and the divinity. Such great personalities' birthday, 100th birthday centenary is being celebrated. I am very much thrilled, and with ecstasy, I have been prostrating at the divine soul of Pujya Swamiji. प्रमुख स्वामी महाराज कहता है, सीधे सीधी बात कर रहा है, ચારિત્ર વગરનું શિક્ષણ ભક્ષણ કરે છે અને ચારિત્ર સાથેનું શિક્ષણ રક્ષણ કરે છે. અત્યારે શિક્ષણ આપણે બાહ્ય શિક્ષણ બધું ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે અને આકાશ પાતાળ એક કરી રહ્યા છે એટલું. પણ જે મૂળ શિક્ષણ, જે ચારિત્ર હોવું જોઈએ, એની કમજોરી હોય એટલે બધું બગાડે. તો બધું યોગીઓ વાતો કરતા કે 8 કલાક ભણવું અને બીજા એમાંથી રહી ન જાય એ તો વાત કરતા, પણ ભાર મૂકે ચારિત્ર ઉપર કે ચારિત્ર હોય એક. And ounce of practice is more than tons of theories. रक्षा करो